Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. We're doing this for the big game today between Bangalore and Delhi, and looks like we have lost Nikhil Bhai's connection. Currently happy to be doing this. It's been a while, बहुत time के बाद हम ये live कर रहे हैं, and Nikhil Bhai should be with us any moment. So आज के live में agenda will be we will start off with the fan to play base team. We'll try to understand kya conditions hai, and if you saw the preview for the evening game already, there's a section that I'll be doing called form versus matchup, where we'll try to look at the players who are high on form and whether we can drop them any sort of matchups. Welcome back, Nikhil bhai. बताओ लाइव करने जाओ और नेट बोले Hello. कि हाय अभी हम जिंदा है. Yes, that is the story of unpredictability this season. But बिल्कुल apart from that, Nikhil bhai, how are you doing? How do you see this game going, Bangalore versus Delhi? यार बहुत ही ज्यादा जय माता दी हो रही है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल लाइक इट, हाउ मेनी पीपल डोंट लाइक इट, पर ऐसे सब मैचेस में आपको याद रखना है कि आपकी गलती नहीं है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपका विजुअलाइजेशन अगर कुछ है और टीम अगर मस्ती करे तो इट्स नॉट योर फॉल्ट. किसी सेन इंसान ने नहीं सोचा होगा कि लॉकी बॉल आउट नहीं करेंगे. Nobody thought that Shardul will bowl only 5 overs. That too because Russell Five balls. will take 3 wickets. That's first time in the season. While आपको पता था कि कभी ना कभी ये होगा, पर अभी होगा, 3 ओवर डालेंगे, एंड में भी डालने आएंगे. तो these all things ये हो रहे हैं आईपीएल में, पूरे सीजन में हो रहा है कि रान स्कोर कर रहे हैं, तुषार देशपांडे रन मार रहे हैं और टीम्स ऑल आउट हो रही है सेकंड इनिंग्स में जबकि चेजिंग इजी है. तो द थिंग इज आप अपने विजुअलाइजेशन को बैक करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं. तो आरसीबी डीसीबी देखो, आप सीधा पूछोगे तो कोई भी बोलेगा कि भाई बैंगलोर बहुत फेवरेट, एज क्लियर एज इट इज. पर भाई ये बैंगलोर है और सामने दिल्ली है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है भाई. Yes, so win predictor, we'll start straight to the point. Nikhil bhai, win prediction, Delhi or Bangalore, and no elaborations allowed, no diplomacy allowed, only the team and one reason on why or why not. So Bangalore, purely because I don't think Delhi are using their resources well. If they promote Aksar, different game. Fair enough, and obviously, who does not like playing devil's advocate? So my win prediction for today, Delhi, and two reasons, simple. One is Akshar versus Faf and Virat. We'll talk more about that matchup in the form versus matchup section. Another is Nokia against a middle order that has not been tested at all. So it's going to be Delhi's bowling versus Bangalore's batting. And on that note, let's start by looking at the venue conditions first up. So venue conditions and the game is at Chinnaswamy. जैसे आप बोलते हो तारीख पे तारीख, यहाँ होता है 6 पे 6. And Nikhil bhai, short ground dimensions and the pitch is patta as ever. The only different factor here can probably be it being a day game. So how do you see that going, and will spin come into the game because of that factor? Because apart from that, spin has had horror outings here except for a certain Chehal. या बिल्कुल, आई थिंक वो चीज सेम ही रहेगी. मुझे लगता है कि रन्स तो बनने चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ डे गेम. पिच रिपोर्ट बिकम्स क्रिटिकल. थैंकफुली सम ऑफ देम हैव बीन फेयर एंड एक्यूरेट इनफ. तो अगर ड्राइनेस पता चलती है तो हसरंगा और अक्षर पटेल बिकम वेरी वेरी क्रूशियल पिक्स फॉर पीपल, क्योंकि देन अगेन दोनों ही टीम का मिड ऑर्डर थोड़ा जय माता दी है. तो इट विल इधर वर्क इन देयर फेवर और वर्क कंप्लीटली अगेंस्ट देम. तो आई थिंक स्पिन को हेल्प होगी, बट फिर भी रन्स तो बनने चाहिए. आई थिंक 180 170 तो इजीली बनने चाहिए. Fair enough, and this is the pitch. These are the visuals of the track, and pretty much a flat out track, at least from what we saw last game. So we can expect a lot of more runs. And on that note, with a lot of runs, but do we have as many batsmen to pick? That will be the key question. So let's look at the base team. So over to the base team for this game, and we will start off straight with the keeping section, where you're wondering, should we even pick anyone and move to the next section? Because both these batters, even though super talented, generally don't get much of a chance to bat. So we have gone with Dinesh Karthik experience. One factor जिसके बारे में आप सोच सकते हो is if Sarfaraz plays, then he'll play in the little bit of the top side of the order. With Abhishek, he's playing lower, but even because Abhishek has shown a certain amount of form, I don't think they'll switch that out.
The other probability is Anuj Rawat, and if he comes in, and if you feel like that Akshar Nokia scenario will come in that case you can try them, but otherwise Dinesh is probably the safest choice. Nikhil bhai, any views on this, and maybe a Salt or Allen? जी आपको लगता है नहीं कि बाकी दो कोई खेलेगा, कोई खेलता है Hmm. तो देन स्ट्रेट अवे आपके टीम में आ जाएगा। तो यहाँ Hmm. पे द कॉल दैट यू हैव टू टेक इज व्हिच टीम इज लाइकली टू टेक मोर विकेट्स, उसका कीपर ले लो, क्योंकि फिर आपको कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट हो जाएगी। क्योंकि बैटिंग तो देखो ये दोनों टीम की ऐसी है ना, या तो ये दोनों 10वें ओवर में बैटिंग करने आ जाएंगे या तो बैटिंग ही नहीं मिलेगी। तो वो चीज तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा। तो आई थिंक Hmm. प्रेडोमिनेटली मे बी सबके टीम में सेफ ऑप्शन विल बी दिनेश, द रिस्की विल बी पोरेल और सरफराज इफ ही प्लेस। Yes, fair enough. Over to the batting side, and यहाँ पे आपके पास to start with three बहुत obvious picks है जो सबके टीम में होंगे, will be Warner, Faf, Virat. Three picks. Prithvi Shaw will be in consideration because of the kind of track that this is, but Siraj has taken him out 3 times. So if you think कि Siraj चलेंगे तो फिर I think Shaw will be out. But अगर आप सिराज पे चांस लेने को तैयार हो, then Shaw can be in your side. Nikhil bhai, apart from that, are you looking at Manish Pandey here because it's his home ground, or do we move straight to the next section? नहीं देखो स्मॉल लीग में तो आई डोंट थिंक इन तीनों को छोड़ के किसी को लेने में सेंस लगेगा, क्योंकि सी बहुत दफा लोग बोलते हैं कि क्या आप कॉमन टीम दे रहे हो, सेफ टीम दे रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज सम ऑफ द टीम्स ओनली यूज दीस प्लेयर्स टू डू वेल। वो ज्यादा प्लेयर्स को उस सिचुएशन में नहीं डालते जहां पे वो चले। सो दैट इज वाई यू प्रिडोमिनेटली कैन नॉट रिस्क। और ये प्लेयर भी ऐसे है ना कि जब चल जाएंगे तो 70-80 अकेले मार देंगे, तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। बट इन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस वेर यू एक्सपेक्ट के से कि चलो यार वार्नर जल्दी आउट हो जाएगा सिराज को, तो फिर वहां पे यू कैन टेक इन रुस्सो और मिचेल मार्श जो इस गेम में खेलने वाले हैं, तो यू कैन यूज देम इन दो सिनेरियोस कि यार फिर ओके अर्ली विकेट्स हैं तो मनीष पांडे विल प्ले अ डिसेंट पार्ट एंड देन यू हैव टू मेक योर टीम अकॉर्डिंगली। तो अपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से यू कैन बैक शॉ, यू कैन बैक मनीष पांडे एंड इवन रिली रुस्सो इफ ही प्लेस। Yes, fair enough. So here we'll talk about the form versus matchup section. There are actually all three of them have certain matchups. Warner maybe not as intensive because one of the two left arm pacers will go out for to make space for Hasaranga. Plus it's a day game, so maybe utna movement bhi na ho. But David Willey or Wayne Parnell, whoever, if you want to back and take a risk on Warner, then these are one of the two players that you can pick to replace. While if you want to take a risk on one of Virat or Faf, or if you're mad like me, then both, then in that case the captaincy option for you becomes someone like Akshar or Nokia, because then you're expecting them to be taken out in the power play, or for Akshar to come in straight in the 5th or 6th over and take them out below 30. So that's the form versus matchup, and those are the risky drops and picks that you can make only in your rotation mini GL teams or private leagues that you're playing. Over to all-rounder section, and यहाँ पर picks काफी obvious है. Akshar, Glenn will be up against a lot of left-handers when he's bowling, but will he bowl or not? That will be the question. And उसके अलावा Mitchell Marsh and Hasaranga. Mitchell Marsh का form has been थोड़ा up and down, तो उस पे आप संभल कर रही है कि अगर आपको लग रहा है कि full flat pitch है and he'll be able to take advantage, then आप खिला सकते हो. But otherwise, here there's Shahbaz Ahmed who's going to come up against a line of right-handers. So if there's any help in the track, that's another mini GL pick for you to try again in rotation. If whenever you're picking one of these players, आप ये सोचिए कि वो सामने कौन से प्लेयर को निकालेंगे. अगर आप शाहबाज को ले रहे हो, then think of the fact कि will he take out Manish, Prithvi or any of those right-handers and then accommodate him in your side. बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो जैसे भी जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, एक बात याद रखना, सी नोबडी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट सिनेरियो। आप हमेशा एक विजुअलाइजेशन को चल के टीम बनाते हो। तो जैसे कल भी मैंने भी काफी टीम में हैरी ब्रूक को रखा था, बट नोबडी सॉ हिम स्कोरिंग अ टन गिवन द फॉर्म दैट ही वाज कमिंग इनटू। तो बहुत लोग ने उसको कैप्टन भी रखा था, विच इज ग्रेट। तो दैट इज व्हाट वी से कि यू हैव टू बैक योर विजुअलाइजेशन एंड देन सी वेयर इट टेक्स यू। तो यहाँ पे भी जैसे मैचअप है, इफ मैक्सवेल स्टार्ट्स बॉलिंग टुडे, ही इज द प्राइम कैंडिडेट, बेस्ट कैंडिडेट टू बी द कैप्टन। पर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर वो विजुअलाइजेशन में पूरा आपका कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसे सारे कॉल्स विजुअलाइजेशन के साथ जाओ, चाहे तो जैसा बोलते हैं दो टीम के साथ खेलो, एक में रिस्क लो एक में मत लो, एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। Yes, absolutely. So that's the key for today, all-rounders. And over to the bowling section. Here we have gone with Siraj, Harshal, Nokia. Few of you have commented that Harshal as captain while bowling first. Definitely when bowling first, irrespective of the ground, because वो जिस phase में डाल रहे हैं, he will have
2-3 such games जहाँ वो wickets लेके तीन चार जाएंगे, विकेट या and that will be enough to give you mini GL. So the other two picks या are pretty obvious क्योंकि वो 2 power play में 2 death में, तो there's no reason या for you to tinker with that. One pick जिनके बारे में आप सोचोगे but maybe आप लोगे या नहीं लोगे will be Kuldeep Yadav. Here he'll have one key matchup will be against Maxwell. Maxwell has faced about 20 balls against him. Strike rate is more than 200, but वो उनको out भी multiple बार कर चुके हैं. So again, if you want to pick Kuldeep, who do you take the risk on? Someone like Maxwell, if you think that, and if you're certain that he's not going to bowl. So that's how I'm trying to एनालाइज एंड पुट पैरेलल्स टुगेदर कि जब भी आप किसी को पिक कर रहे हो, आप ये भी सोचो कि वो किसको आउट करेगा, या इफ यू आर पिकिंग अ बैटर, with that batter will play in which phase and which bowler will he knock out. That will be the key to all your answers. बिल्कुल बिल्कुल माय आंसर इज सेम, नो डिफरेंस. So that is the team, and captain and vice captain, obviously the safe choices are Virat and Akshar, but you know that these are not going to be my choices. So Nikhil bhai, who are going to be your choices apart from these two? तो देखिए कॉमन ऑप्शंस जैसे हम काफी प्रीवियस में बात करते हैं, दे विल बी फाफ, विराट एंड अक्सर और मैक्सवेल. तो इन चारों में से ही आप किसी दो को लेके आगे जाओगे. द रीजन टू मेक विराट कैप्टन इज अगेन एक ही मैचअप है नोकिया का, तो होपफुली वो ढंग से अगर निकाल लेते या फाफ खेल लेते उनको, तो फिर विराट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, तो ही शुड डू वेल. एंड अक्सर बिकॉज उनकी बॉलिंग यूज नहीं हो रही सही से, पर बैटिंग तो आ रही है, और वो जिस फॉर्म में आप He's एक्सपेक्ट the करते हैं second उनसे कि highest भाई, scorer. तो मतलब अगेन इट इज लॉजिकल. तो बट इसके अलावा इफ यू वांट टू ट्राई, आपके पास बहुत विकल्प हैं. यू हैव वनिंदु, यू हैव हर्षल, यू हैव नौके. तो ऑल सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस भी कर लिए. तो आई थिंक इन्हीं सब में से कोई दो को लेके आप आगे जा सकते हो, इवन इन योर मिनिजियल रिस्की टीम्स. Yes, absolutely. So that's as far as the base team is concerned for this game. And now we'll get over to the favorite section, the Grand League options. And before we get to the Grand League options, something very cool to share with you is that the fan to play leaderboard is currently live. So you can see there are rewards to be won here right up till the 100th rank, and all you need to do is participate in the tournament leaderboard here. 7,800 spots only, so competition is damn less. You can make up to 30 teams. App link is in the description, and 200% bonus on your first deposit. So don't miss out on the chance. And yes, few of you are asking me about the mini GLs here. So these are the mini GLs which I'm going to try to target by rotating that base team. So जो base team हम discuss कर रहे हैं, यहाँ पे 7 rupees की entry पे we are getting 7,000, and yeah, this league doesn't fill up also quite a few times, so you'll be able to take that advantage also. So I think ऐसी league को आप target करो, because I have seen कि some people try to play private leagues, which is fine when you're damn sure about your risks and you're ready to lose that capital. But in case you're a little dicey about losing the capital like me, then in that case you can go for such a league where the first prize is still lucrative, but in case आपका दिन सही नहीं गया, फिर भी आपको कुछ तो वापस मिल ही जाएगा. So that's as far as the base team and the leagues for this game are concerned. Obviously, we are targeting 70% mini GLs, and you can play few small leagues with the base team because it's not that risky, the team that we have made. But now let's look at the Grand League options. Go for it, sir. तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस आई थिंक ऑप्शन डिस्कस तो हो गए हैं ऑलरेडी एक बार. तो बॉलिंग फर्स्ट यू हैव हर्षल पटेल, एंड बॉलिंग फर्स्ट यू आल्सो हैव एनिस नौके. टू प्लेयर्स हु बोल इन द की पार्ट्स ऑफ द गेम. और अगेन एकदम लॉजिकल है ये, इसमें कोई रिस्क भी नहीं ले रहे हो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो. बस रिस्क एक ही है कि उनका यूसेज ढंग से हो, कि हर्षल एटलीस्ट 4 डालें और नौकिया तो 4 डालने ही चाहिए. और नौकिया के साथ एक ही रिस्क अगर आप कहोगे, एसोसिएट करोगे, तो ये है कि शायद टीम उन्हें प्ले आउट करे. तो यू हैव टू बैक नौकिया टू टेक पीपल आउट व्हाइल डिफेंडिंग, while for Harshal you want people to take him on so that he takes wickets. So those are the two very very obvious picks to try. इसके अलावा एकदम प्रॉपर जय माता दी इस सीजन के 2 पिक होंगे, तो वो होंगे मिचेल मार्श, क्योंकि सर वापस आ गए हैं अच्छे इवेंट से, तो शुड डू वेल. एंड फ्रॉम बैंगलोर मैक्सवेल बॉलिंग करेंगे तो. Yes, Lady Luck might shine today, so let's see how that part goes. My picks for this game, obviously, like always, Nikhil bhai is taking the obvious one, so I'll move straight to the Jai Mata Di one. So the pick from Bangalore is Shahbaz Ahmed.
आई एम Yeah. एक्सपेक्टिंग कि आज थोड़े अर्ली विकेट जाएंगे तो उनको बैट के साथ भी Hmm. मौका मिलेगा. And plus he will bowl, I think he should bowl few overs to the Delhi Yeah. right handers, because few of them do have that strike rate fall when they face spin in the Yeah. first 10 balls. So that will Correct. be a factor that will come into the game. So in case Hasaranga is still little rusty or still coming off in these conditions, then in that case Shahbaz has already played a bit here, so he'll know how to handle it. So that's as far as Bangalore is concerned, and from Delhi it's Kuldeep. So for some reason I'm backing spin here today because I have a feeling Hmm. that in the day game there might be some help from the track for them. Possible. So that's the picks. Now we'll move to the exchange 22 picks, but before that we'd like to take all your questions and take Yeah. some comments in. So we'll start straight from the start. Hello, It's Gulchan, Anuj, Naveen. Thank you all. Omkar as well. Yeah, this one Mandar, we hi. already Vichal, hi. discussed. Good to make Yes. Harshal Patel captain while bowling first. Yes, we already discussed Yeah. ये वाला. Pakistan versus NGGL. Big बोलना आज. Yes, sir का हाँ. कमाल है Harris. Only Harris. वही Thank है, you, देखो Sahil. पूरा दुनिया आईपीएल में बिजी था, तो काफी अच्छा वैसे गेम चला गया. पर वही है, देखो, सी द थिंग इज दैट एंटायर सीरीज इज ओनली फॉर ग्रैंड लीग्स. आप वहां पे स्मॉल लीग खेलोगे, एक प्लेयर गेम बिगाड़ के जाएगा. और Hmm. पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं है भाई, किस दिन शहीन शाह बॉलिंग नहीं करेगा, किस दिन हारिस रऊफ बॉलिंग नहीं करेगा, किस दिन शहीन शाह के ऊपर 4 पे बैटिंग करने आ जाएगा. तो सारे दरवाजे खुले रखना वहां पे, और जो की प्लेयर है उनको बैक करना पाकिस्तान सीरीज में. Yeah, and thoda overpowered bhi ek team over the other because यस. NZ has come with C team. So sadly, that's the या. case. So या. we'll move to exchange 22 picks before we take the other questions. And one key point for you to keep in mind for whoever is watching this on the FCP channel is there's a Rario link in the description. You'll get a $20 bonus and 100% cash back on your first bronze match pack purchase to $9 ka hai. So quickly go from the link in the description and check that out. And now let's look at the exchange 22 picks for today. So Nikhil bhai, any thoughts, any picks in your mind that you have shortlisted already? तो देखो, एक्सचेंज विंडो जैसे हमने बात करी थी, आपको वैल्यू देख के देखना है कि जैसे हमने शमी के बारे में बात करी थी कि एक ही विकेट लेता है अगर, तो आपका काम हो जाएगा. वही Hmm. हुआ था आई थिंक, उस गेम में एक ही विकेट ली शामी सर ने, तो वैसे यू गॉट डिसेंट प्रॉफिट. तो कैसा है, मेनी टाइम्स बीट फैंटेसी और एक्सचेंज विंडो, हम वी ऑलवेज ट्राई एंड गो बिग कि भाई बहुत बड़ा जीतते हैं, बट वो बहुत बड़ा जीत आती नहीं है. तो उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे स्मॉल कैलकुलेटिव रिस्क लो, जिसमें आपको जीतने का ज्यादा चांस हो. तो इस गेम में भी अगर आप देखो तो जो बोलर्स का प्राइस है, इट्स Hmm. ऑल फेयरली प्राइस्ड. तो अगर आपको कोई भी ऐसा बॉलर दिखे जो आपको लगे कि नहीं भाई ये बंदा 2 विकेट तो लेके जाना चाहिए, तो आपका काम फिर उसमें हो जाएगा. तो इन दैट सेंस, पोस्ट टॉस आई डेफिनेटली टेक अ कॉल ऑन स्पिनर्स जो हमने डिस्कस करा, और जो हमारे Hmm. ग्रैंड लीग ऑप्शंस थे, हर्षल पटेल, एनएच नोकिया, हसरंगा, इन्हीं सभी के बीच में से ही आई ट्राई एंड पिक अ फ्यू, क्योंकि आई नो वहां से वैल्यू आनी चाहिए. Yes, fair enough. So if you see Harshal, Siraj, both are priced at 30. Willie is also priced at 30. So जैसे निखिल भाई ने कहा, if he gets 2 wickets, then that's 40 points. And how the system works is if you're buying the player for 30 and if he gets you 40 points, then you get 10 rupees of profit per share. So that's how you'll be able to remove the profits. So अगर आपने 10 share लिए, so 10 into 100, you'll get 100 rupees profit from that. And the easier part here is while the profit margin might seem lesser, is जब बुरा दिन भी हुआ तब लॉस भी 10 रुपए का ही होगा, क्योंकि Yeah. तब वो सिर्फ 20 एक विकेट लेंगे तो you'll get those 20 points and 20 rupees back and your loss will still Yeah. be only rupees 10. So keep that point in mind. If you're a big margin chaser, then multi-baggers are for you, but if you're a Yeah. safe player, then the buy and sell section. From the Delhi side of things, we obviously already discussed Nokia, and even he's at 30, so he becomes a value pick. And Akshar is at 40, तो अगर आपको लगता है कि he'll be able to get 2 wickets and give you 20 runs, then in Yeah. that case you can buy him out. Nikhil bhai, any thoughts on the multi-bagger section and any eyes on any of them here? Because obviously returns are exponential. And for those who don't understand multi-bagger कैसे चलता है, आपको जो player लगता है आज highest points ला कर देगा, उसको ही आपको लेना है. समझो you bought Prithvi Shaw today for 10. You can see estimate return is 13.91, which means कि if you Yeah. buy him for 10 and if he's the highest pointer, or in our language dream team captain of the day,
then you get 130 rupees back, and you can also buy दो तीन players का shares, not necessary that Yeah. you have to buy only of one player. So example, I am confused between Shaw and Powell. I buy both, and whoever strikes gives you the profit. But if they are not the dream team captain, then you get back zero. So Zero. keep that point in mind. The risk is much higher. So Nikhil bhai, any multi-baggers, high risk, high reward? Actually, if you just see multi-bagger में, the the return for Nokia is 34 times, almost Oh. 35 times. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन टू टेक. पर वही है कि आपको ये देखना है कि आप 4 5 या 10 होल्ड करके भी खेल सकते हो. आपको 10 रुपए का शेयर है तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टू मच इनटू इट अनलेस यू आर वेरी श्योर कि नहीं भाई बॉलिंग सेकंड भी करेगा तो भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स ये देगा. सो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो 4 ओवर तो डालेगा, और अगर वो 3 विकेट ले लेता है और बाकी कोई नहीं लेता तो आपका काम हो गया. सो दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट. एक और तरीका जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ कि चलो आपको लगता है कि शॉ नहीं चलेगा आज, तो शॉ का अगर आप सेल प्राइस देखोगे तो 36 का है, पर जिस दिन वो चला तो आपको पता है कि भाई चलेगा तो ये बहुत दे देगा. 32 में सेल करने के लिए शॉ इज अ वेरी गुड प्राइस. अगर आपको लगता है कि जल्दी सिराज को आउट हो जाएगा तो 2 4 मार के भी आउट हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट है. बट इफ यू फील कि नहीं ये लंबा मारेगा पर आपको बाय करने का कॉन्फिडेंस नहीं, मल्टीबैगर में 3 4 लेके रख लो. जिस दिन वो चला आपको पता है वो 100 मार देगा. तो अगेन दैट इज अगेन इट्स एन एग्जांपल. यू कैन गो द सेम वे विद रॉबमन पावेल एज वेल. रॉबमन पावेल मल्टीबैगर में भी काफी हाईली परसेंटेज है, 52 टाइम्स रिटर्न्स है. बट व्हाट यू हैव टू बी श्योर इज ही विल बोल, he will not face Hasaranga. In those scenarios में Powell has a very good chance to do a good job. But again याद Especially on रखो, this ground. हाँ तो देखो ग्राउंड छोटा है पर दिल्ली का फॉर्म और ये प्लेयर कैसे यूज होते हैं, these are all risky picks. ये सब सेफ पिक नहीं है. तो सेफ पिक करना है तो आप बाय सेल करो. मल्टी बैगर में या तो मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो चीज हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड रहेगी. तो विच इज आई थिंक अ फेयर वे. तो जो जैसा खेलता है उसके लिए वैसा ऑप्शन. Yes, fair enough. App link is in the description. Ensure that you go check it out. And now a few more questions. क्या सिराज को ड्रॉप कर सकते हैं? So sir, we discussed this at the start कि अगर आपको लगता है कि शॉ चल जाएंगे, शॉ अगर आपको 30-40 रन दे देंगे एंड वो उसके बाद वाले बैटर्स वो मोमेंटम उठा के डेथ में लेकर जा पाएंगे, देन यू ड्रॉप सिराज. ऑब्वियसली ये कंडीशन में मे बी बिकॉज इट्स डे गेम, ज्यादा मॉइस्चर ना हो ट्रैक में, तो मे बी ही डज नॉट गेट दैट मूवमेंट टू, सो इट विल बी drop that will not be totally illogical, क्योंकि while form है उनके साथ, but there are some batters सामने जो वही conditions का फायदा उठा पाएंगे. So if you think like it will be spins day and not pace, then you can drop Siraj. और एक और मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ. अगर हसरंगा खेल रहे, डो नॉट रूल आउट हसरंगा और हर्षल बॉलिंग एट दी है. तो ऐसा हो सकता है कि सिराज शुरू में डाल दे 3, और अगर थोड़ी भी मूवमेंट मिल गई तो सिराज भाई साहब जय माता दी करके जा सकते. तो इट इज कंप्लीटली योर विजुअलाइजेशन. अगर आपको पिच रिपोर्ट में सुना देता है कि मॉइस्चर है सरफेस पे थोड़ा, कि क्लाइमेट ऐसा है कि स्विंग हो सकती है, तो देन सिराज बिकम्स अ वेरी गुड प्लेयर टू टेक अ रिस्क ऑन. कि भाई हाँ वो शुरू में अगर 3 विकेट लेके जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, एंड में फिर हसरंगा तो ही आपके साथ डालने के लिए. बट अगेन इट्स एन अजम्पशन कि हसरंगा एंड में डालेगा तो, और नहीं डालता तो सिराज आप होप करोगे एटलीस्ट एक और एंड में डाले. तो ऐसे आपको सिनेरियोस इमेजिन करके फिर आपका कॉल लेना. Yes, fair enough. Nokia is captain, vice captain. Onkar, he's surely going to be my captain or vice captain today. So fair enough risk, especially because he does have the numbers even against few of these batters, and middle order will definitely be tested with Nokia. Can we drop Duplessis and Russo? I think Delhi itself might drop Russo, so I'm not sure about that. Yeah. But and on this ground, if he's playing, then he's definitely worth the pick. क्योंकि he's like that 6 hitter. तो यहाँ पे तो भाई, if he's playing, then he's a good punt pick for you to try. That too, that if you feel like he's going to get past Hasaranga easily. Duplessis is totally dependent on अगर आपको लगता है Akshar will get help from the track, because otherwise I don't see the rest of the Indian pace attack that Delhi has. I think Virat and Faf might enjoy it. बिल्कुल. और साइनो का काफी अच्छा कमेंट है जहाँ पे वो नंबर्स बता रहे हैं हसरंगा और पावल के, पर यही है देखो, these are great numbers. Now whether you want to back him completely on that, अगर ड्राई रखे तो I expect हसरंगा to win the way, and it's the start. So ये भी आपको याद रखना है कि एंट्री पॉइंट क्या होती है पावल की, वो किस सिचुएशन में आ रहा है, तब हसरंगा ने क्या किया है और प्रेशर किस पे ज्यादा है.
इफ पावेल डजंट गेट, ही स्टार्ट्स ऑफ वेल एंड देन ही फेसेस हसनगा, तो वो उनको मारेंगे. तो अगेन, हम्म. जो जैसे हम बात करते हैं फॉर्म वर्सेस मैचअप, दिस मैचअप वर्क्स क्लियरली इन फेवर ऑफ रॉबिन पावेल, बट वी नो ही इज ससेप्टेबल टू लेग स्पिन. वी सॉ दैट इन द लास्ट गेम एज वेल. तो अगेन, you can always back your visualization and do what you feel will happen. And I think one thing why you're seeing this matchup is because if you see with many leg spinners, they generally float it up, while Hasranga is little more flatter in the air and he Yeah. tends to pitch it short, and that's where Powell is able to Power. take the advantage. So the type of leg spinner also plays a key part, and the Yeah. kind of ground conditions, like Nikhil Bhai said. Can we बिल्कुल. make Manish Pandey captain in small league? भाई पिक आप पिक कर लोगे और वो चल जाएगा तो भी आप जीत जाओगे. You don't need to make him Yeah. captain for it to work. Like I understand, I connect with you about the fact कि रिस्क लेने में मजा आता है, but small league में इतना रिस्क मत लेना यार. Yeah. बिल्कुल. देखो, कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो खाली आपकी टीम के होने से भी काम हो जाता है, पर अगर आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो आपका पूरा टीम का कॉम्बिनेशन फिर उसी कैप्टन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो नहीं बहुत चला ज्यादा तो रिस्की कैप्टन, गुड और नाइट. नहीं चला तो फिर वहां से फिर कुछ रिटर्न नहीं आएगा. तो अगेन, बट इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू टेक दैट रिस्क, तो प्लीज लो, डू नॉट ऑलवेज बैक योर गट फील. ये मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट मेक्स यू विन द बिग अमाउंट्स, बैकिंग योर ओन गट फील ऑन प्लेयर्स. एंड बट अगर आप बना रहे हो स्मॉल लीग में तो प्लीज एक दो प्राइवेट कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना, कुछ वो चल गया तो आप वो भी जीत जाओगे. सो बनाना है तो वो अलग बात है, बट फिर वहां भी ज्वाइन कर लेना. बिल्कुल. Please name 5 players high risk that you can drop. So Gulshan, you'll have to rewind the video a little bit क्योंकि हम already ये cover कर चुके हैं. So don't worry. अब we've already named it. Batting section में है ऐसे कुछ नामचीन खिलाड़ी जिनको आप drop कर और देखो, सकते हो. आप ड्रॉप जिसको चाहिए उसको करो. देखो, एक बात बहुत बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार हाई परसेंटेज सिलेक्शन को ड्रॉप करना चाहिए. सी, इट्स योर कॉल एंड देयर हैज टू बी लॉजिक इन दोस ड्रॉप्स. जैसे वीरेन ने समझाया, फाफ को आप कब ड्रॉप कर सकते हो, विराट को आप कब ड्रॉप कर सकते हो, मैक्सवेल को कब ड्रॉप कर सकते हो, वार्नर को कब ड्रॉप कर सकते हो. पर ये ड्रॉप्स अगर इनमें से 2 भी चल गए ना, तो टीम कहीं नहीं दिखेगी विलिंगटन, क्योंकि पूरा गांव लेके आएगा इनको. तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन योर गट फील, और जरूरत है तो ही रिस्क लो. इन टर्म्स ऑफ गट फील पे रिस्क सब लेते हैं, 9-10 प्लेयर सबके कॉमन होते हैं, 11वां प्लेयर रिस्की होता है, बट द रिस्क हैज टू बी वर्थ इट. Yes, absolutely. Will Marsh bowl today? Everyone's golden question. Marsh bowled 2 overs, if I'm not wrong, in the last 4-4. game. Oh, four. He bowled four. Yeah, sorry. That was at pace track, right? So yeah, he Yeah. bowled full in the last game. So why not? Like ऐसे Only track पे Ponting मतलब was. if spin doesn't get help, then he'll bowl obviously. So it Yeah. depends on the conditions. And बिल्कुल. impact player है भाई, तो all rounder पे bowling expect Yeah. करना is always going to be a little tricky. बिल्कुल. Cheers, sir. Cheers to you. Why do we still play? Why we still play fantasy after new rule of TDS? So many people have this doubt. एक और बार clear कर देते हैं. TDS tax हम पहले भी भर रहे थे. Like at least I know many people who were anyway paying that 30%. फर्क अब सिर्फ यही है कि वो टैक्स यू आर पेइंग as soon as it gets withdrawn from your wallet, Yeah. rather than you paying it at the end of the year. End of the So season. क्या हो रहा था कि हम विड्रॉ कर रहे थे, सोच रहे थे कि अच्छा हम 1 लाख जीत गए, फिर हमको एंड ऑफ द ईयर पता चल रहा था कि नहीं, इसमें से 33% तो निर्मला दीदी को देने. सो वो हमको बाद में रियलाइज होता है. Now though, for me personally, this is better because the money goes directly, so I don't have to think about the fact कि अच्छा I need to keep 33% or 30% on the side. So yeah, practically the rule has not changed. वो पहले भी था, अब भी है, बस फर्क now is कि सब भर रहे हैं, बस that's the only difference. That's the only difference. बराबर है. Shaw century loading today itself in Chinnaswamy or Powell Dhamaka. Now, Powell का खेलना तो I don't think is certain yet, but Shaw century depends on the track. अगर flat track है, spin को help नहीं है, then definitely loading. In fact, he's a good player of spin also. So I think if he gets past Siraj का matchup, then it's very possible. So और अब I देखो, think वही है. जो पेस ऑप्शंस भी अगर आप देखें बैंगलोर के पास, जो पेसर बोले तो कौन कौन पेसर, यू हैव सिराज, पिछले गेम में पार्नेल, एंड यू आल्सो हैड विली. इसके अलावा आकाशदीप है. हाँ, एक दो वो दोनों ओवरसीज में से कोई एक तो चला जाएगा. और जिसमें से भी अगर आप देखो तो सिर्फ आकाशदीप बचते हैं आफ्टर सिराज फॉर हिम टू टेक केयर ऑफ. तो यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू डू वेल,
पर अब देखो ये है कि वो अब वो वीकनेस इतनी ऑब्वियस हो चुकी है कि ही जस्ट हैज टू प्ले थ्रू विदाउट टेकिंग दैट रिस्क अर्ली. अगर वो कर लेते तो फिर शायद डेफिनेटली ही कैन हैव अ गुड डे. फॉर द टूर्नामेंट ऑल्सो यू विल होप कि शॉ पावेल ये चले, क्योंकि देन इट लाइट्स अप द टूर्नामेंट इफ दे आर एबल टू विन अ चिन स्वैम. Yes, absolutely. Fair enough. We can take another few questions. Rasso and Panel. Yeah, Rasso can definitely be multi-bagger. Yeah. मतलब वो खेलेंगे तो मतलब अब एक दो शेयर तो लेके रख दो, क्योंकि चल गए तो फिर वो चांस तक, एंड नहीं चले तो 20 रुपए या 10 रुपए ही जा रहे हैं. So that's okay. And Panel is little dicey because if you see the point system on Exchange 22, एक problem है कि you don't get bold and LBW का points. So वहाँ से आपको bonus नहीं मिलेगा, and that will reduce the point potential for the bowling team. If you're comparing it to your vanilla fantasy apps, bowlers का value यहाँ पे 10-15% थोड़ा सा कम है. So buy sell section में you clearly are able to see that difference, but multi-bagger में ये बात आप ध्यान रखना. So unless you think panel 4 ले लेंगे तो अलग बात है, but नहीं तो I don't think so. Fair. We should try Marsh as C. Yeah, like it depends on the kind of team that you're trying this in, right? Because again, form is not with him. But yeah, if you're trying him in mini GLs, then definitely yes, because bowling. And another point to keep in mind is कि if in Bangalore we have seen कि spinners अगर पहले एक दो ओवर में hit खा लेते हैं, then they don't come back. And who will be the person you'll bank on in that case? Your pace all-rounder, which will be Marsh. So in that scenario, जहाँ पे आप spinners को back नहीं कर रहे हो, then you can take Marsh as captain in that case. बिल्कुल. कल तो उमरान मलिक भी एक ओवर के बाद एक ही ओवर डालने आए, तो फिर बाकी सब तो क्या ही है, मतलब क्या बोले. God, that sums up everything. And yes, we'll try to do this live Q&A more often. And we are gonna do this probably tomorrow also. So at least हमने सोचा कि weekends पे तो हम आ ही जाएंगे आपको थोड़ा परेशान करने. तो MI versus KKR similar time पे we'll see you all again tomorrow. And like button जरूर तोड़ना जाने से पहले. And आज जर्सी गिवे तो नहीं है. And last time विजय शंकर ने तो बैटिंग की ही नहीं. तो जर्सी तो क्या ही बेसिस पे दे दे. बट एक आप बात बता दो निखिल भाई, यू टेल मी टुडे, गोल्डन क्वेश्चन फॉर टुडे जस्ट फॉर फन, हाउ मेनी रन्स डू यू थिंक पृथ्वी शॉ विल स्कोर? लेट्स कीप 36, गुड नंबर. 36 ऑफ मतलब बाउंड्री बोनस पॉइंट्स भी तो गिनने ना हमको. 36 ऑफ 20. ठीक है, 36 ऑफ 20. निखिल भाई ग्रैंड लीग वाइस कैप्टनसी चॉइस याद रखना, जरूर ट्राई करना. किसी ना किसी टीम में तो ट्राई करना ही है भाई. Yes, absolutely. Thank you so much to everyone who tuned in. We hope all of you enjoyed this preview. All the app links are in the description, so जाके वो benefit जरूर उठाइए. And it's only the second day of the fan to play leaderboard, so ensure that you try it out. And 2 lakhs first prize, so don't miss out on it. Thank you so much to everyone who tuned in, and see you all very soon for the next one. Happy winnings, guys. Take care.